हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों। आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही इतना टफ नहीं जितना बच्चे सोचते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आ गई इसका मतलब बस हथियार डाल दिए। ऐसा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर हम फॉर्मुलेट कर दें और उसकी इक्वेशन बना दें तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। यस, आज हम टेक्निक सीखते हैं कैसे हम उसको बहुत ध्यान से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं। सम added, sum of numbers increased by this number, more than, it means क्या है, प्लस करना है। Sum of the number of books and notebooks, when 5 rupees is added with the 20 rupees, and plus means addition. Second is subtraction, that is minus. What are the words in the equation? Minus, less, subtracted from, less than, diminished by, difference of, between, decreased by. These are the words when we have to use minus. Then the next symbol is into. Product. Product of multiplied by. Product of two digits. Very clear. Multiplied by. Product of times. कितनी चीज का कितने times. Mother's age is 5 times डॉटर्स एज। इसका मतलब डॉटर की एज का 5 टाइम्स कौन है, मदर की एज। डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट ऑफ रेशियो बिटवीन द इनकम्स, इट मींस डिवीजन। इक्वल टू सब जानते ही हैं, सेम एज, इक्वल्स टू, एज मच एज पॉसिबल। दीज आर द की वर्ड्स और इनको अगर हमने पकड़ लिया तो कोई ताकत नहीं कि हमको वर्ड प्रॉब्लम आसान नहीं लगे। करेक्ट। अब प्रॉब्लम्स होती कितने तरीके की हैं। प्रोडक्ट्स डेली लाइफ रिलेटेड, ये प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे मैंने क्या बताया था, 4 मस्क एंड 2 हैंड सैनिटाइजर बोटल्स। वन मोर कस्टमर परचेज्ड 2 मस्क एंड 3 हैंड सैनिटाइजर बोटल्स। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्रोडक्ट बेस्ड, डेली लाइफ रिलेटेड। टेबल्स एंड चेयर्स कॉस्ट, नोटबुक एंड बुक्स कॉस्ट, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कॉस्ट, smartphone and simple phone cost. These are product of daily life related things. Fractions, ratios. A fraction, numerator and denominator. Ratio, p by q. These type of questions, second type. Third type, numbers and digit. 2 numbers, sum of the digits. Third type. Ages, father's age, son's age. ये छोटी क्लास में ना 6th क्लास से चला रहा है और तब से बच्चों के दिमाग में इतना डर बैठ जाता है, फियर फ्रॉम मैथ्स। ऐसा कुछ नहीं। मैं जब छोटा था ना, मेरे को सबसे अच्छी यही प्रॉब्लम्स लगती थी। मेरे दोस्त लोग सब घबराते थे मगर मैं बहुत जल्दी से कर देता था। अभी भी आप क्लास में देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, पेन पेंसिल छोड़ के उठ जाएंगे, नहीं भैया नहीं आती। ऐसा डरना नहीं है। वेरी इजी, वेरी इजी। बस क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इतनी सी बात है। और इक्वेशन के बाद तो आपको सॉल्व करना आता ही है, सारे मेथड, कोई सा भी मेथड लगाओ, इज योर चॉइस। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस मच, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप्स। स्पीड एंड डिस्टेंस, नो डाउट धीरे धीरे टफ। डिस्टेंस बिटवीन द पुणे एंड महाराष्ट्र, बॉम्बे, how many kilometers, if the car runs with the speed of this and that. Questions based on speed and distance. And time and work. 2 women and 5 men completes the work in 7 days, and 1 man and 3 women completes the work in 2 days. And इस type के problems. So one by one we'll start and finish the topic. First type problems only for you. It means you will finish all the problems based on products and daily life related whenever 2 things, and whenever 2 things are there you have to suppose x and y. So first type problems 100% I am sure that you will complete within 1 day. So now we start the problems based on fractions and ratios. So write the first sum. Say the sum of the numerator and denominator of a fraction
सपोज न्यूमरेटर इज एंड डिनोमिनेटर इज. एक तो क्या है इसकी लैंग्वेज में एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ना है. डोंट रीड द होल क्वेश्चन 2 times 3 times. नो, stop, read, stop, read, and so on. So first line, the sum of the numerator and denominator of a fraction. Sum of a numerator and denominator of a fraction. इतना ही पढ़ा ना, आगे नहीं पढ़ा. Is 3 less than twice the denominator? Is equals to 3 less than what? Twice the denominator. Twice the denominator, 3 less. 3 less than twice the denominator. Very simple. So first equation, if you frame x minus y equals to minus 3. Secondly, if the numerator and denominator are decreased by 1, if the numerator and denominator decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. The numerator becomes half the denominator. Denominator means y. Now, numerator decreased by 1, denominator decreased by 1, then numerator will be half of y minus 1. वापस पढ़ो लैंग्वेज को. If the numerator and denominator decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. The numerator equals to half the denominator. Now find the fraction. Very simple. If we have two equations, you can solve it very easily by any of the algebraic method of your choice. 2x minus y equals to 1 is the equation number 2 and is the equation number 1. Now we have to solve. Minus y and minus y. Whenever signs are same, we have to subtract. So here, first we write the equations and then we subtract. Subtract these two, sign will be changed. So minus x equals to minus 4, x equals to 4. When x equals to 4, substitute here. 4 minus y minus 3. So minus y equals to minus 7. Y equals to 7. Hence the required fraction is 4 by 7. Now we have to check. Check बहुत जरूरी है. कैसे check करेंगे? Step by step. First line of the question. Read it again. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. Sum of numerator and denominator 11 is 3 less than twice the denominator. 14 में से 3 minus करो, आगे 11. First is correct. If the numerator and denominator are decreased by 1, if you decrease by 1, then numerator is half the denominator. Numerator is half the denominator. Very simple. Hence, your answer is 100% correct. कितना आसान है? One more. The sum of the numerator and denominator, the sum of a numerator and denominator of a fraction is 18. First line 18. If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3. The fraction reduces to 1/3. Find the fraction. बताओ कितने जल्दी से इक्वेशन बना दी. 3x y plus 2. 3x minus y equals to 2. Equation number 2. Equation number 1. Now you know very well how to solve. Minus y and plus y. Simple addition. When you add these two, 4x equals to, add these two, 20, x equals to 5. And when x equals to 5, substitute here or here, 5 plus y equals to 18, y equals to 13. So the required fraction is 5 by 13. Now you have to check in the rough column what the question says. Sum of the numerator and denominator is 18. Correct. Second, 3 times of numerator 15 equals to, simple, 13 plus 2 15. Hence your answer is 10% correct. The important point of these type of word problems is you have to write from the initial point, let the numerator be x, let the denominator be y. You are getting 1 mark.
For the next step, framing the first equation, you are getting 1 mark. Framing the second equation, you are getting 1 more mark. And step by step you are getting marks. So don't leave any step blank or don't leave the whole question blank. क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. जितना आता उतना लिखो, because boards में step by step marks मिलते हैं. Correct? So now we come to the next type, numbers and digits. Next type problems based on numbers and digits. उसके लिए थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा. क्या? डिजिट्स हमेशा होते हैं x and y. ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है टेंस डिजिट. वेरी क्लियर. ये डिजिट्स हैं, मगर नंबर कौन होगा? नंबर होगा 10x plus y. फॉर एग्जाम्पल 48. तो डिजिट्स कौन है? 4 and 8. यूनिट डिजिट 8. टेंस डिजिट 4. तो फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर इज 4 into 10 plus 8. तभी तो बना भाई 48. 48. सिंपल थिंग. नाउ सपोज डिजिट्स इंटरचेंज. घुमा देते हैं. डिजिट्स इंटरचेंज, इट मीन्स y x बन गया, x y बन गया. देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर? दिस y goes to this side, so 10y, and x goes to this side, 10y plus x. तो ये ओरिजिनल नंबर और ये इंटरचेंज्ड नंबर. नाउ द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digits is 165. अब छोटी छोटी लाइन पढ़ते हैं. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 165. Sum of these two. Very simple. Interchange number और पुराना नंबर दोनों का टोटल कितना बोलता है? 165 is the first equation. And the total 10 and 1 11x. 10 and 1 11y equals to 165. अब जाके देखना है यार कुछ छोटा हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो. 1 1 11 से डिवाइड 1 टाइम 5 टाइम इक्वेशन नंबर 1. अब आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना पहले, स्टेप बाय स्टेप. सेकेंड लाइन, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3. इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3. अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा. x plus y or x minus y, if you add these two, what we are getting? 2x equals to 18, x equals to 9. When x equals to 9, substitute here. 9 minus y, 3 minus y minus 6, y equals to 6. Hence the original number is 96. And reverse number is 69. चेक करते हैं. टोटल 165. Very true. And the second point, sum of the digits, difference of the digits 3. Absolutely correct. And you are getting 4 out of 4 marks. Easy. One more. मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है ये बार बार काम में आने वाला है. नेक्स्ट सम. The sum of the digits of a two-digit number is 15. X plus y is 15. First equation. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. New number exceeds the original number by 9. 10y में से y चला गया, 9y, x में से 10x चला गया, 9x और 9. Whenever this one be cancel out with the same number. Correct. छोटा हो रहा तो बढ़िया. Equation number 2. Equation number 1. Now if you add these two, जैसे ही ऐड करेंगे, what we are getting? minus x and plus x cancel out. Y and y 2y and 1 and 15 16. So y equals to 8. अब जब y 8 आ गया, लगाओ यहाँ पर 8 minus x 1 minus x minus 7, x equals to 7. X is 7, y is 8. It means original number is 78 and new number is 87. Now according to question, new number exceeds the original number by 9. This minus this 9 and you are getting 4 marks. आसान. तो आज का होमवर्क NCERT बुक में जितने भी प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शंस,
डिजिट्स एंड नंबर्स, ये 3 तरह के क्वेश्चन होमवर्क में निपटा देंगे, कर लेंगे ना? गुड। नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं एज इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तब तक टेक केयर, गुड बाय।